Hello learners. Welcome to our new video, Python Programming for Beginners. In this video, we'll start from the very basics of Python. We'll cover what is a computer language, what is Python, key features of Python, how to write and run Python programs in both interactive and script modes. Then, we'll explain variables, data types and keywords. And finally, we'll write a small Python program step by step with full Hindi explanation. Before we start writing Python code, we must understand what a computer language is. A computer language is a way to give instructions to the computer so that it can complete specific tasks. Computer languages are of two main types. First, low-level languages like machine language, which uses binary shune and ek, and assembly language, which uses mnemonic codes. These are closer to the machine and harder for humans to understand. Second, high-level languages, which are closer to human language and easier to read. These include procedure-oriented languages like C, Pascal, and Fortran, and object-oriented languages like Java, Python, and C++. Computer language वह भाषा है जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, यानी निर्देश. यह दो प्रकार की होती है, लो लेवल और हाई लेवल. लो लेवल मशीन के करीब होती है, जैसे बाइनरी कोड शून्य और एक. हाई लेवल इंसानों के लिए आसान होती है, जैसे पाइथन और जावा. Now let's talk about Python, the language we are going to learn. Python is a high-level and object-oriented programming language. That means it is easy for humans to read, and it supports the concept of classes and objects. It was developed by Guido van Rossum in 1989, and it was inspired by an earlier language called ABC. The first version of Python was released in 1991, and the latest stable version is Python 3.13.2, released in 2025. Python is open source, which means anyone can download and use it for free. It's also very beginner-friendly. Python एक high-level और object-oriented language है, यानी इसे पढ़ना आसान है, और यह object के concept को support करती है. इसे गाइडो वैन रोसम ने 1989 में बनाया था, और इसका बेस लैंग्वेज था ABC. पाइथन का पहला वर्जन 1991 में आया था, और लेटेस्ट वर्जन 3.13.2 है, जो 2025 में रिलीज हुआ है. यह एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, इसका मतलब इसे कोई भी फ्री में यूज कर सकता है. बिगिनर्स के लिए यह बहुत आसान है. Let's now look at the features that make Python such a popular programming language. First, it is platform independent. This means Python programs can run on any operating system like Windows, macOS, or Linux. Second, it is open source. Anyone can download, modify, and use it freely. Python is also case sensitive. That means name and name will be treated as different variables. It is very easy to learn and has a clean, simple syntax which is easy to read and write. Python also has a huge collection of libraries which help in tasks like web development, data science, artificial intelligence, machine learning, automation, and more. अब बात करते हैं Python की खासियतों की, जिनकी वजह से ये लैंग्वेज इतनी फेमस है. सबसे पहले, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी कोई भी Python प्रोग्राम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल सकता है. ये ओपन सोर्स भी है, आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं. Python केस सेंसिटिव है, यानी स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर को अलग अलग माना जाता है. जैसे नेम और नेम, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं. इसकी सिंटैक्स बहुत ही सिंपल और रीडेबल होती है, जिससे इसे सीखना आसान हो जाता है. Python में बहुत सारी रेडीमेड लाइब्रेरीज मिलती है, जो वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, ऑटोमेशन जैसे कामों को आसान बनाती है. Now that we understand what Python is and how it works, let us come to the most important building block of any program, the variable. What exactly is a variable, and why do we need it? A variable is a name that stores a value in the computer's memory. The value of a variable can change during program execution. It holds only one value at a time. If a new value is stored, the old one is replaced. In Python, we don't need to declare variables before using them. We use the assignment operator equals sign to assign a value. For example, x thus stores an integer value. Y
3.14 stores a float value, and name Python stores a string. Rules for naming variables. Variable names can have letters, digits, and underscores. They must start with a letter or an underscore, not with a number. Variables are case sensitive. Age and age are different. Also, we cannot use Python's keywords like class or definite as variable names. Variable के नाम में letters, digits और underscore हो सकते हैं. नाम letter या underscore से शुरू होना चाहिए, number से नहीं. Python के sensitive है. Age और age अलग-अलग variables है. और Python के reserved keywords जैस class या definite को variable के नाम के लिए use नहीं कर सकते. Variable एक नाम है जो कंप्यूटर की मेमोरी में कोई वैल्यू स्टोर करता है. प्रोग्राम चलाने के दौरान उसका वैल्यू बदल सकता है. एक समय पर एक हाई वैल्यू स्टोर करता है. नया वैल्यू देने पर पुराना डिलीट हो जाता है. पाइथन में पहले से डिक्लेयर करना जरूरी नहीं होता. और वैल्यू असाइन करने के लिए हम इक्वल साइन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, x 10 में इंटीजर वैल्यू स्टोर की गई है. y 3.14 फ्लोट नंबर स्टोर करता है. और नेम पाइथन एक स्ट्रिंग वैल्यू है. Let's now look at data types in Python. A data type specifies the kind of value a variable is storing, whether it's a number, decimal, or text. The three basic data types in Python are int for whole numbers, like 10 or -5, float for decimal numbers, like 3.14 or 9.8, str for strings, which are text values written inside quotes, like Python or hello. Let's understand data types with examples. Here, x 10, this is an integer, so the data type is int. Y 3.14, this is a decimal number, so the data type is float. Name Python, this is a text value inside quotes, so the data type is str. Here, x, y, and name are variables, and thus 3.14 and Python are values with specific data types. Let us now understand the int data type. Int is used to store whole numbers in a variable. These can be positive or negative, like 89, -34, or 0. The typical range is from 2 147 483 648 to 2 147 483 647. There are 3 types of integers in Python. Int for normal whole numbers. Long for very large numbers beyond the usual range. Bool for logical values like true and false, where true is treated as 1 and false as 0. इन डेटा टाइप का उपयोग पूरे नंबर यानी पूर्णांकों को स्टोर करने के लिए होता है. ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, जैसे 89, 34. पाइथन में इंटीजर के 3 प्रकार होते हैं. इंट सामान्य संख्या. लॉन्ग बहुत बड़ी संख्या. पाइथन 3 में ये खुद हैंडल होता है. बूल लॉजिकल वैल्यू जैसे ट्रू और फॉल्स, जहां ट्रू 1 और फॉल्स 0 माना जाता है. Let us now look at a simple example. x 100. Here, x is a variable storing an integer value, 100. Flag true. In this line, flag is a variable storing a boolean value, which is true. In Python, true is treated as the number 1, and false is treated as 0. x 100. यहाँ x एक वेरिएबल है, जो इंटीजर वैल्यू 100 को स्टोर कर रहा है. फ्लैग ट्रू. इसमें फ्लैग एक वेरिएबल है, जो बूलियन वैल्यू यानी ट्रू को स्टोर कर रहा है. पाइथन में ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0. Now let us understand the float data type. Float is used to store numbers that contain a decimal point, like 3.14, -0.5 or 2.0. If you need more precision in your calculations, you should use the float type. For example, price 99.99. Here, price is a variable storing a float value. Temp -5.75. Temp stores a negative float value. Float data type का इस्तेमाल डेसिमल वाले नंबर्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है, जैसे 3.14, -0.5, 2.0. ये सभी फ्लोट वैल्यूज है. उदाहरण के लिए, प्राइस 99.99. यहां प्राइस वेरिएबल में फ्लोट वैल्यू स्टोर है. टेम्प -5.75. यहां नेगेटिव फ्लोट वैल्यू स्टोर की गई है. लेट्स नाउ लर्न अबाउट द स्ट्रिंग डेटा टाइप इन पाइथन.
A string, or str, is used to store text, such as words, names, or messages. Strings are always written inside single or double quotes. For example, name Python. Here, name is a variable storing the string Python. MSG Hello World. This is another string using single quotes. String यानी str डेटा टाइप का उपयोग टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए होता है, जैसे नाम, मैसेज या कोई भी शब्द। स्ट्रिंग्स को हम हमेशा सिंगल या डबल क्वोट्स में लिखते हैं। उदाहरण के लिए, नेम पाइथन, यहां नेम वेरिएबल में एक स्ट्रिंग वैल्यू है। MSG हेलो वर्ल्ड, यह भी एक स्ट्रिंग है जिसे सिंगल क्वोट्स में लिखा गया है। Now let's talk about Python keywords. Keywords are special reserved words in Python which have predefined meanings. They are used to define the syntax and structure of the Python language. You cannot use keywords as variable names. Doing so will cause an error. For example, if, else, while, for, definite, class, return, true, and false are all Python keywords. So if you write if punch, Python will throw an error because if is a reserved word. Keywords वो खास शब्द होते हैं जिन्हें Python ने पहले से रिजर्व कर रखा है। इनका मीनिंग फिक्स होता है और इन्हें हम वेरिएबल के नाम की तरह यूज नहीं कर सकते, जैसे if, else, while, for, definite, ये सब कीवर्ड्स हैं। अगर आप लिखते हैं if पांच तो यह गलत होगा क्योंकि if एक कीवर्ड है। Now let's create a very simple Python program step by step. This is perfect for beginners, especially if you are writing your very first Python code. First, we declare two variables a and b and assign them the values thus and punch. Then we add them and store the result in a variable called sum. Finally, we use the print function to display the result. The output will be the sum is 15. चलिए अब एक बहुत ही सिंपल पाइथन प्रोग्राम बनाते हैं, बिल्कुल शुरुआत से। पहले हमने दो वेरिएबल्स लिए, a10 और b5। फिर हमने इन दोनों को जोड़कर सम नाम के वेरिएबल में रखा और अंत में प्रिंट फंक्शन से उसका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाया। आउटपुट होगा the sum is 15. Here hash symbol is used for comment. Both interactive mode and script mode is shown. To write program, open interactive mode and then go to file and then new file. Now write your program in script mode. So friends, in this video we covered all the basics every beginner must know. What is a computer language? What is Python? Its features, variables, data types, and keywords. We even wrote a simple Python program, all explained step by step, with easy Hindi explanation. In the next part, we will talk about Python operators, expressions, and do more practice with fun activities. अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करें yes और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। हैप्पी कोडिंग।